Word of the day, hold. To keep something in your hand, to keep or contain, to organize, to stop or delay, or to keep someone or something in a position. मतलब पकड़ना, थामना, रखना, मुनक्किद करना, रोकना. Let's learn uses of the word hold with examples and practice sentences. English Booster by Kashwani. One word a day. Say it the better way. Subscribe for your daily dose. To carry or grip something in hands. पकड़ना या थामना. Example, please hold my bag. बराए मेहरबानी मेरा बैग पकड़ो. Keep or contain something. रखना, समोए होना. Example, this bottle holds 2 लीटर of water. इस बोतल में 2 लीटर पानी आता है. To organize or conduct an event. मुनक्किद करना. Example, they will hold a meeting tomorrow. वो कल एक मीटिंग मुनक्किद करेंगे. To stop or delay. रोकना. Example, hold the bus please. बराए मेहरबानी बस रोको. To keep in a particular position or condition. बरकरार रखना. Example, hold the door open. दरवाज़ा खुला रखो. To control or restrain. काबू रखना. Example, hold your anger. अपना गुस्सा काबू में रखो. Let's practice these sentences to save in your active memory. Learn and repeat. Please hold my hand. बराए मेहरबानी मेरा हाथ पकड़ो. She held the baby carefully. उसने बच्चे को एहतियात से थामा. This hall can hold 500 people. ये हॉल 500 लोगों की गुंजाइश रखता है. We will hold a party tonight. हम आज रात एक पार्टी रखेंगे. Please hold the door for me. बराए मेहरबानी मेरे लिए दरवाज़ा पकड़ो. The teacher held the class after school. उस्ताद ने स्कूल के बाद क्लास ली. Hold your breath for a moment. एक लम्हे के लिए सांस रोक लो. He held his position firmly. इसने अपनी पोजीशन मजबूती से बरकरार रखी. The bottle holds milk. बोतल में दूध आता है. Please hold the line. बराए मेहरबानी लाइन पर रहें. She held back her tears. इसने अपने आंसू रोक लिए. We hold meetings every Monday. हम हर पीर मीटिंग करते हैं. He held the rope tightly. इसने रस्सी मजबूती से पकड़ी. Please hold your books properly. बराए मेहरबानी अपनी किताबें सही तरह पकड़ो. The police held the suspect. पुलिस ने मुश्तबा शख्स को रोका. It's time to homework now. Make any 2 sentences with word and share in comment section to make collection of beautiful sentences for practice and use it in your daily life from today. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. Share and subscribe for more videos.